बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द राइट वे एकेडमी। आज हम फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर की बुक से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन उन तमाम चैप्टर्स के देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं और आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसमें आपकी फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से इसके शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट अमंग द प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू नो अबाउट द डायमेंशन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। इसमें हमने डायमेंशंस राइट करनी है प्रेशर और डेंसिटी की। क्वेश्चन नंबर 5 है डज द डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ proportionality that may appears in algebraic expression, explain. Question number 6 है show that the famous Einstein's equation is equals to mc square is dimensionally consistent. Question number 7 है what are the dimensions and units of gravitational constant g in the formula of the F is equals to g m1 m2 और r square. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज the sides of a closed polygon represent the vector arranged head to tail. What is the sum of these vectors? Question number 4 है how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give resultant equals to a vector of the same magnitude. Question number 5 has show that the sum and the differences of two perpendicular vectors of equal lengths are also perpendicular and the same length. Question number 6 has students if all the components of the vector a1 and a2 were reversed, how would this altered a1x a2 multiply a2? क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द टर्म्स। इन टर्म्स को आपने जस्ट डिफाइन करना है यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 डिफाइन द टॉर्क एंड राइट इट्स फार्मूला। इसमें आपने टॉर्क को डिफाइन करना है और इसका फार्मूला लिखना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब वेक्टर एडिशन बाय द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 है स्टूडेंट्स 3 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द टर्म इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट अमंग द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द रॉकेट propulsions, a special case of law of conservation of momentum. क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ballistic missile as an application of the projectile motion. Question number 6 है students define the term linear momentum. Question number 7 shows that impulse of a force is equals to the charge in linear momentum. Question number 8 है explain the difference between elastic and inelastic lion. Explain how would your bouncing ball behaves in each case. Give the plausible reason for the fact that kinetic energy is conserved in most cases. Question number 9 has student find out the expression of the force on the wall due to the water flow. Question number 10 have find out expression of the force on a wall due to the water flow. Question number 10 has students at what position or points in its path does a projectile have its minimum speed, its maximum speed? For example, 3.2.
तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना, साथ साथ सब नोट करना है ताकि आप लोग बाद में भी इसको रिवाइज कर सकें जब आपको ज़रूरत हो। तो इन क्वेश्चंस को आपने केयरफुली सुनना है। कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में बार बार जो सिलेक्ट होते हैं, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए वो एग्ज़ाम में बार बार डाल देते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें यूनिट नंबर 3 की, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 एंड 13, 14 जो है इसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एज अ न्यूमेरिकल पार्ट। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है शो दैट द 1 किलोवाट per hour is equals to 3.6 m joule. नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 एंड 9 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटिंग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है shows that the work done in Earth's gravitational field is independent of the path followed. Question number 2 है define the term power, shows that power is dot product of force and velocity. Question number 3 है state the work energy principle, also derive its mathematical form. Question number 4 है students describe the inner conversion of potential energy into kinetic energy for a free falling object. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 है हमारे पास डिफाइन द टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स व्हाट डू यू नो अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्टिंग्विश अमंग द रियल एंड अपेरेंट वेट। अगर हम यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो हमारे पास 5.2, 5.3, 5.4, 5, 7, 9, 10 एंड 11 जो है मोस्ट रिपीटिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल्स हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट 5.2, 5.5, 5.6 एंड 7। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट द स्ट्रोक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन थर्मल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें हमारे पास 6.1, 2, 3, 4, 8, 9 एंड 10 जो है मोस्ट रिपीटिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन 1 ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Question number 2 is state Bernoulli's relation for a liquid in motion and describe the sum of its application. Next students unit number 7 है, इसके short question. Question number 1 है name the two characteristics of simple harmonic motion. Question number 2 है what do you know about the term phase. Question number 3 है define the term resonance. Question number 4 है students describe the some common phenomena in which resonance plays an important role. Question number 5 है डिफ्रेंशिएट अमंग फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। अगर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखें उनमें हमारे पास 7.4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 एंड 13 जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखें तो 7.1, 4 एंड 5 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 7.2 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डू यू नो अबाउट द पीरियोडिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ्स। मोस्ट रिपीटिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो 8.3, 6, 7 एंड 10 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस। Question number 1 है what do you know about the Bates phenomena, also describe its applications.
Question number 2 है students, what are the stationary waves? Describe the main characteristics of the stationary waves. Next students, question number 3 है how the stationary waves are produced in stress string. Shows that the frequencies of the stationary waves in a stress string are quantized. अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 8.3 और 6 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के. नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 9. इसके शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म वेव फ्रंट. क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेव फ्रंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट एंड एक्सप्लेन द हाइजेंस प्रिंसिपल. Question number 4, what do you know about the interference of light waves? Question number 5, what are the current source? Question number 6, what do you know about the Newton's ring? Next students, question number 7, how the Newton rings are formed? Question number 8, what do you know about the diffraction of light? Also describe some example of diffraction of light. Question number 9, what do you know about the diffraction grafting? Question number 10 है define the term grafting element. Grating element. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 9.1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है 9.3, 4, 5, 6 एंड 7. स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें. नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10. इसके शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट vision. Question number 2 है define the term critical angle. Question number 3 है what do you know about the refractive index of material. Question number 4 है state the Snell's law. Question number 5 है students, what is the total internal reflection. Next students, long question आते हैं. Question number 1, derive the formula for angular magnification of simple microscope. Question number 2 है derive the formula for angular magnification of compound microscope. Question number 3, what do you know about the astronomical telescope? Describe the construction and working of astronomical telescope with the help of ray diagram. Next students, question number 4 is chapter के long question. Derive the expression of magnifying power of astronomical telescope. Question number 5 है what do you know about the spectrometer? Also describe some application of the spectrometer. Question number 6 है describe the Michelson's experiment to determination of the speed of light. Question number 7 है describe the some advantages of fibers optic. Next है students unit number 9. Short question इसके what are the basic postulates of kinetic theory of gases. Question number 2 है define the term internal energy. Question number 2 है define the term internal energy. Question number 3 है students state the first law of thermodynamics. Question number 4 है what do you know about the adiabatic process. Question number 5 है what is the molar specific heat of gases. Question number 6 है differentiate among reversible and irreversible process. Question number 7 is state second law of thermodynamics. Question number 8 है what do you know about the Carnot engine. Question number 9 है students state the Carnot theorem. अगर हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देखें इंपॉर्टेंट तो 11.1, 2, 5, 6, 7, 8 and 11 are the most important repeating questions in the board examination. आगे numericals problem है 11.1, 3, 4, 7, 8 and 11. इस वीडियो के लास्ट में हम स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे. अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज चैप्टर में से करें तो हम एक बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं. अगर हम देखें कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस में से आने हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस किस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट आने हैं, हमें पता चलता है कि यूनिट नंबर 1, 2, 4, 6 एंड 7 के जो चैप्टर्स हैं इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमारा पोर्शन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन होगा उसमें यूनिट नंबर 4, 5 एंड 8 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको बोर्ड में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो पोर्शन होगा उसमें से 9, 10 एंड 11 में से शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो बनेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग सब्जेक्टिव पॉइंट। इसमें अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है। इसमें यूनिट नंबर 2 और 3 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4 और 5 यूनिट में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 और 7 में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8 और 9 और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पे 9 है ये यूनिट नंबर 10 और 11 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। तो आपने स्टूडेंट्स इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।